Welcome, dear all. This is June 23, paper 4-2, right? We are going backwards from November backwards. See? So, question 1. This is November 23 ke three variants. The third one was same. We did 2, then we did 4-1, and this is 4-2. Explain why glucose. Dear students, why glucose is phosphorylated. You know, for glycolysis. Wow, Zabardast. For glucose is C6H12O6. Indeed, this is an energetic molecule. Usman bhai, Rahim, this is energetic molecule, but it is not very reactive. So to increase its reactivity, we have 3 options. Which 3? Number 1, use enzyme to lower the dash. Assalamualaikum. वो आपको बुला रहे थे ऑफिस वाले. और second one is to change it to what? Change to, yes, anybody? Another isomer. Because in chemistry, you know, some isomers, like when one molecule doesn't react much, it's isomeric form reacts. And third one is add phosphate to this. Nice. So this is 2 phosphates are added up. This is called phosphorylation, right? And where does that phosphate come from? ATP. So what kind of phosphorylation is it? Usman bhai. Rahim. Dash linked phosphorylation. Substrate linked phosphorylation. This is, what is it? It is when phosphate group comes from an already phosphorylated substrate. So in this case, phosphate comes from ATP. You can see it gets dephosphorylated and the phosphate attaches to glucose. और इसके advantages बहुत सारे हैं. Number 1, इसका advantage number 1 क्या है कि glucose becomes reactive, है ना? Glucose gets reactive. Second advantage क्या होगा? Yes, that it can go out of cell, it cannot go out of cell. Can't leave the cell. Because, you know, there is no protein which could take out phosphorylated glucose. And this is what we want. We want के glucose cell के अंदर हो और ये expire हो सके. So this is the answer to first question. और उस्मान भी हमारी टाइप करें कि substrate linked phosphorylation. Well done. Suggest one use of NAD. तो आपको तो NAD is a dash C से coenzyme. NAD is what? Coenzyme. And this carries dash. Yeah, so it's hydrogen carrier. ठीक है ना? ये आप कह लो it gets dash reduced to dash NAD. और बेटा ग्लूकोज को क्यों इसका ये क्यों कर दें? To make it gets more reactive. It becomes more reactive. And secondly, it can't leave the cell. और ये क्यों? Due to phosphate, है ना बेटा? Group. Because glucose gets bigger. After phosphorylation, glucose gets more polar plus bigger. और एक सेकंड मुझे अलाउ करें ताकि मैं. Well, the type of phosphorylation occurs by which ATP is made during glycolysis. Definitely substrate length phosphorylation. है ना? There are 3 types of phosphorylation. Oxidative phosphorylation, which occurs in the mitochondria, and photophosphorylation, which takes place in what? Chloroplast. And third one is what? Substrate linked phosphorylation. So this is substrate linked phosphorylation. Welcome, Mr. Naki. आप देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस में जो वो कह रहे हैं एटीपी जो बनती है ना, वो देखें where does ADP pick up its phosphate from? Allah, ADP picks up phosphate from dash. Anybody? From TP. TP is a 3-carbon molecule. Yes or no?
राहिम भाई क्या हो गया? तो दो नकी बेटा, TP is a 3 carbon ठीक molecule. है। So glucose is 6 carbon molecule. So you know one glucose breaks to one glucose then becomes fructose 1,6 bisphosphate, and which then splits into two molecules of TP, triose phosphate. So triose phosphate means everyone carries a phosphate group. If I show this like this, 1, 2, 3 are carbons, and say 1 is phosphate. Is this easy thing to understand? And then is phosphate, and there are 3 carbons. So, Mr. Naki, आप मुझे बता सकते हैं कि what kind of phosphorylation occurs when ATP is made during glycolysis? Substrate link. Because you know, ADP diphosphate picks up phosphate from this and makes ATP, and this without phosphate becomes what? Pyruvate. It also loses what? Hydrogen to reduce NAD. तो इसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं, वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ NAD, और सेकंड वन फॉस्फोराइलेशन ऑफ डैश. उस्मान मुस्तफा, राहिम, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एनीबॉडी? नकी, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP. ADP picks up phosphate from that. So look, this was already phosphorylated. तो इससे आप जब phosphate उठाएंगे, that is called substrate linked phosphorylation. I repeat, substrate linked phosphorylation is when phosphate is taken from an already phosphorylated substrate. Any questions so far? No. So then, gentlemen, pyruvate will enter the mitochondria by active transfer. हम इसको कहते हैं active uptake of pyruvate. आपको याद है, it's called link reaction. What is it called? Very good, link reaction. नकी जाग रहे हैं? जी सर। नकी क्लास में हो और खामोशी हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे बताएं कि लिंक रिएक्शन. सर मैं वो ASP चीज देख रहा था। ओह, तो व्हाट हैपेंस इन लिंक रिएक्शन? सर पहले तो डीकार्बोक्सिलेटेड होगा ये। वेरी गुड. नंबर वन, और डैश अपटेक एक्टिव dash from dash into dash. फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. दिस इज वन थिंग दैट है. The second one आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि decarboxylation, loss of CO2, and third important is हाइड्रोजनेटेड hydrogenation, and fourth एसिटाइल बन जाएगा। is what? Combining with dash. CoA. Wow. Combining with coenzyme A, making acetyl CoA. So the rest is easy. You can describe the main conditions that are needed for pyruvate to enter. What is main condition? सर एक तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है so we need ATP, दूसरा we need a partially permeable membrane. Sorry बेटा? Active transport हो रहा है so we need ATP. It should be against the 3 marks. gradient. समझ नहीं आया? 3 marks. One is inner mitochondrial membrane permeable to pyruvate. Oh, mitochondrial membrane should be inner mitochondrial membrane impermeable, ताकि वो बाहर लीक आउट ना करे, मैट्रिक्स में चला जाए फिर बाहर नहीं, है ना? Carrier proteins, lower concentration of pyruvate outside, oxygen available, ATP. So any three. One is ATP, the other is O2 should be available, and obviously dash proteins, Usman Mustafa, dash proteins which could carry out this. Channel or carrier? Anybody? ना, चैनल तो फिक्स शेप की होती है, कैरियर प्रोटीन जो चेन शेप करती है, और डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पायरुवेट एसिड इन दी डैश. तो ये आप अभी चैनल का क्या बोल रहे थे? चैनल में कह रहा हूँ, चैनल तो फिक्स शेप की होती है, कैरियर प्रोटीन. तो एक ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए, दूसरा कैरियर प्रोटीन होने चाहिए, और दूसरा डैश कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पायरुवेट एसिड इन दी. अच्छा सर, जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का हम लिखेंगे वैसे तो फिर चैनल्स लिखेंगे ना? सॉरी बेटा, फिर क्या लिखेंगे? चैनल प्रोटीन. यस, इफ वी राइटिंग अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. कैरियर प्रोटीन जो फैसिलिटेटेड कैरियर से भी होती है. सही. कैरियर कैन डू बोथ, बट चैनल कैन डू ओनली फैसिलिटेटेड.
Next question is pyruvate is involved in link reaction in the matrix of mitochondrium. Describe what is link reaction. If you don't mind, can I say all this to be here? Yes or no? Beta? Yes. Active uptake of pyruvic acid from cytoplasm into matrix या into mitochondrial matrix. Decarboxylation, DR combination with OA. ठीक है? हाँ, आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं. Pyruvic acid plus LO coenzyme A. Yes or no? बच्चों क्या बनेगा? Acetyl OA plus CO2 plus NADH. I should write on NAD also. So this is all what is in link reaction. Any question? उस्मान, I hope you understand. बेटा आप पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है और नकी आपको भी समझ आ रही है. राहिम, explain the meaning of term haploid and diploid. Explain करना. Haploid is cell with one Single set of chromosome. one complete set of chromosomes. और इसकी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? For example, sperms, egg, ovule, transness होता है ना, etc. और diploid, कुछ two complete sets. इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा? Zygote, stem cells. stem cell, yeah, good. अच्छा Well, सर, जो गेमेटोफाइट होगा, जो पॉलन होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? the one that makes gametes. नहीं, गेमेटोफाइट जो पोलन है, नहीं, pollen को क्योंकि gametophyte. उसके अंदर दो होते हैं ना. No, gametophyte is a plant that makes gametes. So ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग बेस पे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से निकल चुका है. प्लांट्स में जो गैमेटोजेनेसिस है और ह्यूमन में जो गैमेटोजेनेसिस, दोनों कोर्स से निकल चुके हैं. लेकिन जो वर्ड है ना गैमेटोफाइट, इसका मतलब है द स्ट्रक्चर दैट मेक्स गैमेट्स. अच्छा सही, वो मैंने पास्ट पेपर में कहीं पढ़ा था, इसलिए पूछ तो रहा हूँ. गैमेटोफाइट, अगर आप पिछला टॉपिक हमारा देखें ना, उसमें बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था कि जो हैप्लॉइड, अगर वो हैप्लॉइड होगा तो माइटोसिस से गैमेट्स बनाएगा. ठीक है. अच्छा, खैर बहरहाल ये डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेन स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1 एंड एनिमल सेल. ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ. तो मैं चाह रहा हूँ आप मुझे गाइड करें आप लोग कि व्हाट इज यस प्रोफेज में क्या होता है. बाइवेलेंट फॉर्म होंगे. यस. तो स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म होंगे एंड क्रॉसिंग ओवर बहुत, होंगे. हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स डैश नो पेरा. तो व्हाट इज मेड इज कॉल्ड बाइवेलेंट फॉर्मेशन. What else you can say? Crossing over on non-sister chromatids. Wow, crossing over between non-sister chromatids. राहिम, मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ. ये इनहेरिटेंस है ना. non-sister chromatids at dash C से. Wow, chasmata occurs. Homologous chromosomes pair up. और बेस्ट चीज तो आपको बताइए क्या है. बेस्ट इज टू मेक अ डायग्राम. ये और फिर मजे से इसको लेबल करें. एनोटेशन. एनोटेशन कहते हैं कि जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. दिस वन एंड व्हाट इफ यू डू लाइक. सर इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी होगी ना? यस, सेंट्रोमेर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स. नहीं, वो नहीं होगी, बिकॉज ये क्रोमोसोम की बात हो रही है. बोल्ड हुआ हुआ. ओह अच्छा. साहब ये है ना क्रोमोसोम. गुड पॉइंट. ये सेंट्रोमेर है. और राहिम ये क्या है बेटा, ये वाला? यस, चेस्मेटा. और ये जो है ना आप देख सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. दिस इज टू मच फॉर दिस. इनफ. मेटाफेज. लाइनिंग अप. At the equator, लाइनिंग अप ऑफ an independent assortment. at equator of the cell. Very good. Anaphase as separation. इधर आप ये डायग्राम बना सकते हैं.
और यहाँ पे एक और भी पॉइंट है जो हमने भूल दिया, अच्छा सर, वो इंडिपेंडेंट। प्रोफेस वाले प्रोमिनेंट भी कर सकते हैं ना प्रोफेस 1 में, यस, कि वो इंडिपेंडेंट। कंडेंस होते हैं? यस, नहीं, कंडेंस प्रोफेस से पहले होता है, अर्ली प्रोफेस आप लिख भी सकते हैं। यस, यू कैन रियली। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है बेटा, कि उनकी जो लाइनिंग आप है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर एक पेयर है, उसमें यहाँ पे अगर बिग टी है और इधर स्मॉल टी है, तो द अदर मे है बिग बी स्मॉल बी, या फिर the other element could be like small b big b. I hope you understand what I said. That each pair, और इसका फायदा ये होता है कि टू मोर टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो बेटा इसका क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे आपने कहा स्पेंडल फाइबर, जो ह्यूमन है ना, एनिमल है, तो स्पेंडल फाइबर्स डैश शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं शॉर्ट है। या कॉटन शॉर्टन, या गुड। और फिर आप इसकी अच्छी सी डायग्राम बना सकते हैं यूं, ठीक। देन टीलोफेज, दिस इज ऑब्वियसली ऑपोजिट टू डैश। प्रोफेस यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स डैश। अनकंडेंस Yeah, you people know everything, mashallah. Nuclear envelope, starts to reappear. yeah, nuclear envelope reforms. Spindle fibers, yeah, microtubules disassemble. Yes or no? So ये this is enough. And now you can make the diagram. आप ये भी लिख सकते हैं each chromosome. ओ यार, फिर हम गलत कर रहे हैं ना, क्रोमोसोम को उसने कहा था। ऑपोजिट क्रोमोसोम अनकंडेंस, ये नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा। एनवेलप न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म भी नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर भी नहीं होगा। ये सारा मैंने फिर लिख दिया। बस आप कहेंगे ईच क्रोमोसोम comprises of dash DNA। 1 उस्मान मुस्तफा के जान, उस्मान भाई, ऑब्वियसली 2 DNA देखें। और ये देखते हैं उस्मान के अंदर 2 DNA, बिकॉज लकी भाई देखें, दिस इज व्हाट गेट्स सेपरेटेड। उप्स, आई कैन नॉट हाईलाइट। ओ हाँ, याद आ गया। हाँ, ये मायोसिस है, माइटोसिस नहीं है। या तो हाँ इसमें ये होगा लाइक ये ये एक न्यूक्लियस बनेगा, फिर एक ये बनेगा। तो मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनते हैं, पता है ना। दिस इज मियोसिस 1, उसके बाद मियोसिस 2 शुरू। स्टेट द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस डिवीजन। गैमेटोजेनेसिस। आई थिंक साइटोकाइनेसिस, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन एज साइटोकाइनेसिस, या because gentlemen this is involves division of cytoplasm। ओ अच्छा से, हाँ। तो ये बताइए टाइप ऑफ वेरिएशन फ्रूट विंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिसकंटिन्यूस। फ्रूट विंग कैरेक्टरिस्टिक्स, fruit wing was recorded, देखिए wingless, okay, just 2 है ना। Okay, so let's highlight the important things here. It's a very important question. See, either winged or wingless, ठीक है ना। प्यार होता है तो होता है, या बताएं, होता ही नहीं, ठीक है। इट्स एन इंडियन सॉन्ग। तो वो कह रहे हैं कि इट्स कंट्रोल्ड बाय टू जीन विद 2 एलील। देखो सिंगल जीन, सारे एविडेंस डिसकंटिन्यूस। सिंगल जीन कॉन्टिन्यूस पॉलीजीनिक है ना। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एनवायरनमेंट का रोल भी है। और कॉन्टिन्यूस में वाइड रेंज है, तो यहाँ पे लिमिटेड रेंज है। परफेक्ट हैंडलिंग जी, दिस इज रियली नाइस फ्रॉम नकी, इज डिसकंटिन्यूस। अगेन बिकॉज देयर इज ओनली वन जीन, देयर इज कंप्लीट डोमिनेंस, देयर इज लिमिटेड रेंज। अच्छा, ये कह रहे हैं डिफरेंट सी ब्रश सजेस्ट 2 ways in which new fruit color could naturally occur। अच्छा, नया कलर म्यूटेशन, क्या, नया कलर एंड अगर किसी और स्पीशी के साथ हो गया क्रॉसिंग ओवर। सॉरी बेटा, एक तो हो सकता है म्यूटेशन से, क्या ख्याल है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, फ्यूजन ऑफ, हेलो, फॉलन फ्रॉम सम अदर स्पीशी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, हैप्लॉइड न्यूक्लियर।
देखें अगर दोनों ब्लैक है ना, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है, बिग बी और बिग बी, दे बोथ आर ब्लैक, तो दे कैन हैव स्मॉल बी वाइट, यस और नो? लेकिन भाई समझ रहे हैं आप? ये और तो कोडोमिनेंस हो जाएगा ना, जरूरी ऐसा नहीं है। नहीं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वाह, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी लिखे, क्रॉसिंग ओवर भी लिखे थे, ठीक है, दे ऑल आर सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। पता है म्यूटेशन मेक्स न्यू एलील बट द अदर्स रीशफल द एलील्स। मेरा आपको नजर आ रहा है कि नहीं? एक चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर लेते, ना इट्स क्लियर। हमें टाइम का स्ट्रेंथ देना, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम रिकॉर्डिंग हो जाए। सजेस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ एविडेंस कंफर्म दैट दे, ओ ये तो बहुत इजी है, सी दे लिव इन द सेम इकोसिस्टम, यस और नो? आप कैसे बताएंगे कि दो जो है ना वो सेम स्पीशीज हैं? हेलो बच्चों, स्पीशीज स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद, याद है, एक तो बायोलॉजिकल स्पीशीज है, एक इकोलॉजिकल है, एक बिहेवियरल है। तो आप कह सकते हो दे हैव सिमिलर डैश, देखते हैं उस्मान क्या कहते हैं। वाह, मॉर्फोलॉजिकल बायोलॉजिकल जबरदस्त। सिमिलर मॉर्फोलॉजी लाइक देयर शेप्स, reproductive ability to interbreed, ability to interbreed. Then what could be the third one? Sharing same ecosystem, है ना? That's called ecological. And similar set of behavior, behavioral pattern आप कह रहे हैं। जैसे होता है ना उनका जो कोर्टशिप सॉन्ग्स हैं वो जैसे होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो बेटा ये कौन कौन सी होगी? इसको तो कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल, इसको कहते हैं क्या? बायोलॉजिकल, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल, यस और नो? एक्सप्लेन व्हाई नेचुरल सिलेक्शन अकर्स इन पॉपुलेशन। ये बहुत सिंपल सी बात है, नेचुरल सिलेक्शन क्यों होती है? बिकॉज ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सो मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग, यस और नो? तो पहला होगा लॉट ऑफ organisms, a lot of offspring, sir. You can say this idea in any words, any of your favorite words. Lot of offsprings are produced. Yeah, you may say organisms that have a huge reproductive potential. ठीक है? There is dash among them, we say. Variation. Yeah, very good. There is variety among them. Not all suit the environment. Yeah, not all are adapted to the environment. Yeah, for some are better adapted, Yeah, more survival those chances, more likely to exactly reproduce, more those likely to pass on those which are and best. into offspring. Yes, those which are best dash population Survive control. and reproduce. वो कह रहे पॉपुलेशन कंट्रोल, वाई नेचुरल सिलेक्शन अकर्स, जबरदस्त पॉइंट है वैसे बेटा। वाह वाह, इससे पॉपुलेशन भी अंडर चेक रहती है ना, इट्स अ सेपरेट पॉइंट। उस्मान में बता देंगे suited, yeah, those which are best suited have better chances to survive. You know what is it called? Survival of, you must have heard of survival of, ये तो बड़ा The पॉपुलर best. जार्गन, बड़ा पॉपुलर जार्गन है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। You can see this in Israel and Palestine, Palestinian crisis, है ना? Fittest, yeah, well done. So there is variation. So the ones which best suit have better chances to, yeah. And there's actually a competition, है ना? Yeah, no problem, no problem. Best suited, yeah, best adapted. When the competition, we have recorded everything, ठीक है? आप वो सुन सकते हैं. When the competition and get selected.
by nature. More than enough for this marks. Next question is 4. He says 2 domains which are sources of restriction. You know, restriction enzymes are taken from bacteria. You know? Some of bacteria are put in Prokarya and archaea. You know, there are 3 major domains. You know, beta. A, B. Hello, A, B. Mr. Lucky, Mr. Usman, Mr. Isa, Mr. Rahim, waiting for 3 domains A, B, and dash. E se. eukarya. Eukarya. And then eukarya further has dash kingdoms. Plant, protist, animal, 4. Animal, and plant, and then fungi. protoplasm. Animal. So overall, there are dash domains. 3. Archaea, bacteria, and eukarya. And eukarya then has 4 kingdoms. Each kingdom then has phylum. Then आगे you know एक mnemonic भी था है ना, कायल पीटर पता नहीं समथिंग. अच्छा, आपने बताने स्टेप्स सजेस्ट भी करने हैं और एक्सप्लेन भी करने हैं. स्टेप्स which are needed to carry out the newer method of large scale production of simply. सर पहले इसका जीन ऑब्टेन करेंगे. वाह वाह, आपको ये ये बेसिकली एक एंजाइम है, इट्स अ प्रोटीन है ना, एंड यू नीड टू मेक दैट. तो ये तो बहुत फन क्वेश्चन है. वी एवरी वन ऑफ अस नोज इट कि सबसे पहले आप क्या करो बेटा, कलेक्ट, हेलो, कलेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट through our restriction gene of enzyme. interest, yeah, good one यार, माशाल्लाह. gene of interest कहते हैं gene Use that the make same restriction enzyme on the gene of plasmid which is gene of taken out from the interest bacteria. using restriction enzyme. अच्छा, ये हम पता है ये यूजिंग से आगे ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन में आ जाएगा. सही बोल रहा हूँ बेटा? You know, he says suggest and explain, ना? तो this second portion को आप explain कर लो. Then what you do it, you know, amplify this. Obtain a plasmid. Amplify this using that. PCR. Great. So this is basically we are explaining. And third one, take out dash from bacteria. Plasmid. Yes. Cut the plasmid. Wow, using same restriction enzyme. Join, cut plasmid. Through DNA ligase. And सर इसमें हम वो GFP वाला भी लिख सकते हैं ना, fluorescent वाला, so we can identify कि कौन से plasmid मिल gene रहे हैं. of interest using ligase. Yes, marker genes है ना, marker genes should also be incorporated. क्या वो बस उसमें होता ही है ना, incorporated to plasmid. इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? To identify है ना, to identify the transformed bacteria. Then bacteria. Then plasmid inserted back. Yeah, उसके And then bacteria fermented में रखेंगे. Yeah, transformed bacteria are what? Grown, है ना, and dash, you know, Fermented. and culture medium to and made to produce, है ना, and made to produce restriction enzyme. Yes or no? That's all easy. Like insulin की जगह आप ये डालते हैं. Describe advantages. ये बस पक्का आंसर है. Advantages of names of restriction enzymes. True. Sorry. आप वो repeat कर सकते हैं? आपने क्लास में कुछ restriction enzymes के नाम बताए थे. ERO1 कुछ ऐसा नाम था. वो क्या नाम था? Eco R1, Eco R2,
इसका ये होता है ना कि restriction enzyme, this tells us the source where you have this is the strand, this is the number of it. Like E. coli, E is genus, co is species, R is the strand. तो E. coli strand R से पहला इंसान, E. coli strand R से दूसरा इंसान, BAM H2. अच्छा, तो क्या हो गया, बोर हो गए? ओ, तो बताए एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस? हेलो, information Can handling. be accessed from anywhere. Yeah, A lot information of information handling. from around the world can be used to compare large Easier, database. yeah. Comparison could be made. Comparisons. Yeah, between genomes. और क्या आपने कहा? Large amounts of data can be stored. Yeah, you can have huge data. Nice. और क्या आपने कहा था बेटा? Share. Information sharing है ना? It's easy. फिर Compare. आपके पास all around the world details होंगी सारी Yeah, species की. similarity or differences between this and this. So let's write some common. So they both separate. Both are separation methods. Yeah, both are separation methods. Nice. सर वैसे इसे आइडेंटिफिकेशन मेथड बोलना चाहिए ना, हम सेपरेट नहीं कर रहे होते, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जस्ट. और क्या हो सकता है? The Yes. chromatography, solubility, well. ना common और common क्या है? I think that's One more common. favorite. बोथ टेक्फाइरा आरएफ वैल्यू. नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो नहीं होती. Which question are we doing? This one. Separation role, both separate. So both separate by mass. Molecule DNA, protein, and this is pigments, medium. बस सारे एक ही common है ना? They both separate by mass. Where is it? Five. Separated due to नहीं, ये तो difference है ना? अच्छा, both by mass. Oh, good one. अच्छा, heavier one chromatography में will be less soluble है ना? Will remain behind. Oh, so in both separation, no important point है ना? Depends on mass differences. पता है ना आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए याद है लकी स्कूल में कितना इसका डिबेट हुआ था है ना? जी सर. तो इन लोगों ने मुझे इतना एम्बैरेस किया, आई वुड सिंपली ब्लश, जैसे मैं बहुत बुरी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. तो सही मैंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, है ना? बड़ा मजा आया था. आप मुझे बताएं डीएनए पे एवरी न्यूक्लियोटाइड हैज डैश चार्ज. नेगेटिव. नो, सेम है डिफरेंट? सेम. DNA. Yeah, same charge. So the movement is driven by the charge, है ना? But the position DNA fragments occupy depends on their size या mass. Mass. मतलब movement is driven by this, but the position they, इसी तरह chromatography में position they occupy depends on solubility, but that ultimately depends on size या mass as well. So this mark scheme tells us something very important really. Never thought this way. But differences obviously के आप chromatography में आप क्या करते हो? Pigments. Separation और of solubility की basis पे. pigments and chromatography. उसमें क्या होता है बेटा? But DNA fragments and one more thing. Do you remember what is that? Amino acids. Yeah, DNA fragments and proteins. Yeah, amino acids and electrophoresis. Then current, you know? Yeah. Current applied and electrophoresis, but not there. The isoelectric point. In the Chemistry. वो कह रहे हैं क्रोमेटोग्राफी में there is isoelectric point. ये जो बच्चे केमिस्ट्री में तो उनको मुश्किल होगा. गुड केमिस्ट्री भाई. There is isoelectric point. बफर भी चाहिए होता है ना? For electrophoresis buffer. अगर आप इसको डिटेल में जानते हैं तो you can say आप करेक्ट कर रहे हैं जो बात हो रही नहीं? There is isoelectric point ना where amino acids. बस थोड़े बार करते ये बहुत है. The rest I leave it to marks in question 5. I don't understand.
Which one? The P ये plus Q. ओ ये आप रिकॉर्डिंग नहीं देखते ना, हम इतनी केयरफुल इसको बना दें प्लीज। आप देखो पी जो है ना वो डोमिनेंट एलील को शो करता है, ठीक है। अभी तो 1 मिनट रह गया। पी शोज व्हाट? डोमिनेंट। क्यू शोज रिसेसिव एलील, है ना। और पी स्क्वायर इज व्हाट? होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव। 2pq इज हेटेरोजाइगस। ये बहुत चिल है। अब देखो उसमें वो कह रहे हैं कि म्यूटेड डोमिनेंट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। 40% आर व्हाट? रेजिस्टेंट। So it means 40% were which one? Beta? 40% were P square and 2PQ. Yes or no? Yeah. Dominant will be homozygous dominant या hetero है ना? और 60% was what? Recessive. तो Q square is 60% और Q आ जाएगा, इसका आप square root ले लो. Once you have Q, then P is actually 1 minus Q. Once you have both, so you can find heterozygous by doing 2PQ. Easy, right? ये बहुत चल क्वेश्चन है। अच्छा इसकी कंडीशन क्या होती है? यू नो कंडीशन ये है कि 1 जीन होना चाहिए बच्चों, 2 एलील्स हैं, कंप्लीट डोमिनेंस है। डू यू रिमेंबर दैट? हेलो, हार्डी-वाइनबर्ग लॉ, कंप्लीट डोमिनेंस, नो एमिग्रेशन। ये तो टाइम खत्म हो गया। एमिग्रेशन भी नहीं है Population और large. एमिग्रेशन भी नहीं है, या और बेटा इतना देना। और क्या होता है इसमें? पॉपुलेशन इज लार्ज, देयर इज No कंप्लीट mutation. डोमिनेंस, या। अच्छा ये मुझे बताओ कि why a new dominant allele, advantageous allele occurs, its frequency increases more quickly? क्योंकि dominant will show itself in what? Either homo or hetero. Hetero both. But recessive will show only in homozygous. Homo. It needs 2 copies. ठीक है ना? We tried to go further, but I think we have to end here. In the next part, we'll be doing 6 to 10 questions. Which one? To